गाड़ी चलाने का शौक मुझे हमेशा से था, बस मौका नहीं मिला। जब मुझे पता चला कि बसेरा ट्रेनिंग में मैं ई ऑटो चलाना सीख सकती हूँ, बस मैं वहीं से चल पड़ी। In this shifting world, clean mobility is one of the few places where new doors are opening. And programs like Driver Bane at Basera are making sure women get to walk through them. Training them to drive e-autos across the city, helping them earn licenses, build confidence and take charge of the roads they travel every day. From quiet neighborhood lanes to busy city crossings, these women are becoming the face of India's move towards cleaner, safer transport, one electric ride at a time. पहले तो परिवार में सब बोलते थे, मत करो, लोग क्या कहेंगे, औरत ऑटो चलाती है। पर अब देखो, जब यंग लड़कियां ऑटो में बैठती है तो बोलती है, आंटी आप कितना कूल हो। सात महीने में 5,000 ज्यादा भी आते हैं। अब फाइनली लगता है कि थोड़ी सी सांस लेने की जगह मिल गई। फ्यूचर के लिए भी मैं कुछ बचा पा रही हूँ। A future more women can be a part of in more ways than one. Because the shift isn't just on the roads, it's unfolding in places that were never part of the conversation. पहले लगता था कि हमारी पूरी जिंदगी इस चूल्हे के आगे ही बीत जाएगी। आंखें जलती थी, बच्चे का गला खराब होता था और सुबह से शाम तक धुएं में रहने पड़ता था। फिर पता चला कि हम गाय भैंस के गोबर से बायोगैस बना सकते हैं। That's when the NDDB stepped in. Every household with milch cattle received a small biogas plant, turning waste into clean cooking gas and the byproduct into organic fertilizer. By using biogas stoves, they now have time to spend outside the house as well. These women have set up a solar-powered milk collection center in their village. हम सब औरतें मिलकर एक ऑल वुमन डेयरी और मैन्योर कोऑपरेटिव चलाते हैं। गाय भैंस का दूध संभालना हो या डेयरी संभालनी हो, सब काम हम खुद करते हैं। हमारी डेयरी पूरी तरह सोलर एनर्जी पे चलती है। अच्छा लगता है। पहले हम सिर्फ घर चलाते थे, अब डेयरी भी चलाते हैं और कोऑपरेटिव भी चलाते हैं। And the women here did not only adopt it, they turned it into an enterprise. 2 places, 2 stories, but the pattern is the same. Whenever clean energy shows up, women don't just use it. They multiply its impact and turn it into opportunity. It is no longer an option to leave women out of India's clean energy transition, because it is women who drive adoption, be it in their household, be it in their community, or be it in economic enterprises. Without women, we may have successful pilots, but for large-scale adoption, for large-scale shifts, we need women. Climate change is closing jobs for women, but everywhere you look, women are opening new ones for themselves. And if India backs them now, they will not only participate in the clean energy future, they will build it, reshape it, and turn it into an engine of economic growth.